uh, the different types of DC motors, they are omega I and omega T characteristics. Okay, so you reached to the governing equations of omega I and omega T with the basic equations of back EMF or the induced EMF in the armature circuit, KVL in the armature circuit, and the torque equation. After that, you reached to a direct relationship between omega and I, a general relationship, and a general relationship between omega and T. Depending upon the types of conditions what you had, separately excited and shunt, you modified these two characteristics on the basis of the conditions imparted by those particular type of connections, and you substituted in and you reached to the relationships of those particular types of motors. ठीक है, so you have omega I and omega T characteristics. Again, for the series machines, you had omega I and omega and I characteristics, inverse characteristics, and omega and in squared T characteristics, inverse square T characteristics. ठीक है, so based on these, when you plot these curves, so what you reach over here is that you had a line on the omega t plane that was slightly drooping in nature because you had a slope, a line with a straight line with a negative slope. So you had a characteristics like this with a negative slope, and it has an intercept of this much. ठीक है, तो जो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक थी सीरीज सॉरी शंट की, तो इसमें जो है आपके पास ये आपके पास इसका स्लोप हो गया आर ए अपॉन के स्क्वायर because omega is a function of t, so this is the slope with a negative sign, and v by k is an intercept of that drooping line, यानी ये v by k के बराबर है और ये इसका स्लोप जो है इस लाइन का वो v by k square के बराबर है. Okay, so similarly you had the second characteristics of the series machines, जिसमें आपके पास ओमेगा 1/t की कैरेक्टरिस्टिक थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था with the square root of t. So in that case you have a characteristic like this, जिसमें आपके पास ये जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ओमेगा की वैल्यू कम होती जा रही है. तो a simple explanation is that what the characteristic signifies is that when you go for very low values of speed, you have a very small value of torque to be applied, ये x axis पे torque है, so in that case what happens is that these speeds go to very large values, ये ऊपर जा रहा है ना, these speed goes to very large values for very small values of torque. So that is why it is always advisable to not to run your DC series motor at no load or light loads. ठीक है. So now we talk about the speed control of this DC series motors, DC motors, both shunt and separately excited, because they are treated as same, because the flux value of fluxes remains same throughout in case of separately excited as well as shunt machines. So you have three types of control. What we have: armature voltage control, field flux control, and armature resistance control. Armature resistance control is a special case of armature voltage control, in which the input voltage of the armature circuit is actually controlled or dropped in a resistance that is put outside. So the behavior remains almost the same as that what you have in case of armature voltage control. थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आता है, के में फर्क आ जाता है, वो भी आगे चल के बता देंगे उस चीज़ को. ठीक है. So basically you have two types of controls: armature voltage control and field flux control. From where they arrive and from where they come is that, and how you reach to these conclusions is that when you see these characteristics, so you have a very, let's go to this more basic one. Yeah, come to this one.
what we have is that because आपने दोनों जनरलाइज करके बताए हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, तो हम इस जनरल इक्वेशन से जो हमारे पास उसकी हैं स्पीड करंट की और स्पीड टॉर्क की हैं, तो व्हाट यू फाइंड ओवर हियर इज दैट व्हाट पैरामीटर्स यू कैन वैरी इन दिस इक्वेशन। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इफ यू वैरी वी, सबसे पहले हमारे पास वी आता है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, दिस कैन बी वैरीड। So if you vary V, what will happen? That the intercept, the slope is not going to change, but the intercept is going to change. अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें और इसमें हम V वैरी करते हैं, अभी हम खाली मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देंगे उसका। तो you have a omega t characteristic and you simply vary the value of V. This V is the input voltage to the armature. ठीक है, so if you see mathematically what will happen, if you increase the value of V, the intercept will increase, the slope will remain same. ठीक है, if you decrease the value of V, या मैथमेटिकल बात कर रहे हैं अभी, अभी इसकी प्रैक्टिकलिटी भी चेक करेंगे। if you decrease the value of V, what will happen, this intercept will reduce according to, क्योंकि आपके पास V जो है वो न्यूमरेटर में है, तो V बढ़ाने से इंटरसेप्ट बढ़ेगा और V घटाने से इंटरसेप्ट घटेगा। स्लोप ऑफ द लाइन पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये आपके पास माइनस m करके जो ये कंपोनेंट है, इसमें V का कोई रोल नहीं है। ओके, so you reach to this point. So now you can vary V. Now V cannot be increased beyond the rated value because there are obvious reasons for it. जो आपके पास हैं कि you have a system that is designed for particular values of power, V into I, that is P. Also, the insulation systems are also designed to cater those values. So V is never increased. So V can always be decreased. If V is always to be decreased, in that case what happens is that that intercept is going to decrease only, and the second thing is that the characteristics are going to be on the lower side of your original curve. ये देखिए, यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज जैसे जैसे होती चली जा रही है, स्लोप ऑफ द लाइन वही है, ठीक है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कम होती चली जा रही है। रेटेड वैल्यू के लिए वी आर, ठीक है, और इसके बाद ये रेटेड वैल्यू के लिए हो गया वी आर का, और उसके बाद जो है आपके पास वी वन, दैट इज से द वोल्टेज दैट इज रिड्यूस्ड बाय सम परसेंटेज, V2 when the voltage is reduced by certain more amount, ठीक है। तो जो आपके पास ये वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट है, जैसे जैसे आप V कम करते चले जा रहे हैं तो इंटरसेप्ट कम होता चला जा रहा है, बट द स्लोप ऑफ द लाइन रिमेन्स द सेम, ठीक है। अर्लियर व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट वाज that we could have different types of characteristics which do not match, with different types of load characteristics which do not match at the desired points. So for that purpose we go for alteration of characteristics of the motor. This is known as alternation of characteristics of the motor. इसका मतलब जो लोड कर्व होता है इस पे, जैसे हमारे पास टी ओमेगा कर्व पे लोड कर्व आपने बना लिया कोई सा भी कैसा भी, then you change the motor characteristics such that the operating point of that motor load system changes, and the load torque characteristics are not altered anyway, only the motor characteristics are shifted. So if there are certain conditions in which certain methods or certain modification in characteristics yield to a desired point of operation. So you have the first method as armature voltage control method. The basic, the fundamental conditions are that the first thing is that voltage can always be reduced, it cannot be increased, and the second thing is that as you see from the equation, the relationship between speed and torque. So what you find is that only the intercept of y-axis changes and the slope remains same. So when you go for a reducing voltage operation, reduced voltage operation, in that case you will be having lines parallel to the rated
torque speed lines at different intercepts. ठीक है. So this is about armature voltage control. Further in this subject, we'll be talking about how this voltage is going to be controlled. अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि मैथमेटिकली उस पे चेंज करने से कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ता है. So we have drawn the characteristics on T omega plane using the basic equations, and now we have altered these characteristics. Up till now, I have not told you that how this parameter is changed. यानी इसमें वोल्टेज चेंज होनी है तो हम एक रिड्यूस वोल्टेज किस चीज से और कैसे लेके आते हैं, वो आगे के लेक्चर्स में होगा. ठीक है. The very same thing what you had is in case of सीरीज मोटर्स. सीरीज मोटर्स में आपके पास जो ये इक्वेशन है. ठीक है. तो इन दिस केस what actually happens is that as you go on reducing the voltage, so this is the rated or the natural rated voltage पे natural characteristics भी कहलाती हैं कि these are the natural characteristics of the machine. So you have the natural characteristics of the machine. Then as you go on reducing the voltage, this distance from this goes on reducing and it travels towards the ओरिजिन. जो आपका कर्व होता है श्रिंक होता चला जाता है 1/√t का जो प्रोपोर्शनल है ओमेगा का, तो ये आपका श्रिंक होता चला जाता है टुवर्ड्स द ओरिजिन. ठीक है. सो यू हैव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन्स वेरी सेम. उसकी शेप एग्जैक्टली वही रहती है, बट ये डिस्टेंस जो है आपके पास आर्क डिस्टेंस जो है ये चेंज होता चला जाता है. ओके. सो दिस इज हाउ you go for a voltage control of shunt motor and separately excited motor and a series motor. Okay. Voltage control से control करने से क्या फर्क पड़ता है? You have to remember this thing that voltage can never be increased beyond the rated value. It is always decreased. Mathematically it is possible कि आप कुछ भी value रख के check कर सकते हैं, but practically when into operation you cannot do this type of thing. ठीक है. So you always decrease the voltage in practical cases. Now coming back to the very same equation, this one. इसमें और पैरामीटर कौन सा बनता है हमारे पास जो वेरी करा जा सकता है? अगर इसमें देखें तो ये बनता है फाई. ठीक है. ये फाई है आपके पास. के ई तो कांस्टेंट है आपका. फाई कैन बी वेरीड, और फाई जो है वो आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप में है, और यहाँ पे दूसरे में भी स्क्वायर्ड इनवर्स रिलेशनशिप है माइनस के साथ, यानी स्लोप में भी ये चेंज मिल रहा है आपको. ठीक है. तो व्हेन यू सी व्हेन यू गो ऑन, और फाई के साथ भी एग्जैक्टली वही कंडीशन है दैट फाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द rated value because the machine will get into saturation. So that is why phi is always reduced. ठीक है. तो इसकी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी तो है इस इक्वेशन में कि घटा भी लें बढ़ा भी लें. इफ यू इंक्रीज दिस तो द इंटरसेप्ट इज गोइंग टू डिक्रीज, और अगर आप इसे घटा दें तो इंटरसेप्ट विल गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं. ऐसे स्लोप की बात आती है. तो नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज दैट phi can only be decreased. ठीक है. So when you see this on the characteristics, so what you find out is that as you go on decreasing the value of phi, अगर आप यहाँ पे जब ये करते इसे कम करते चले जाते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ जैसे phi आप कम करेंगे तो पहला इफेक्ट पड़ेगा इसका phi कम करने का कि स्लोप जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा या कम नेगेटिव हो जाएगा. Anybody? If phi is decreased, the or say the denominator is decreased. Decrease क्यों कर रहे हैं? Because it is considered at rated value. जो original या natural characteristics हैं. Phi can never be increased because it eats them. It drives the machine into saturation.
So in this equation 5.5, if you go on reducing the value of phi, so what will happen? The denominator will decrease. So if the denominator decreases, the slope decreases. माइनस के साथ है ना, तो वो माइनस के वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी. ठीक है, तो वट ये बढ़ती चली जाएगी. इनफैक्ट ज़्यादा माइनस हो जाएगा अगर आप फाई कम करेंगे तो आपका जो ये वाला पार्ट है, स्लोप वाला जो पार्ट है, तो ये बढ़ता चला जाएगा. द सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट हैपन्स टू दिस ऑल्सो इंक्रीजेस. ये आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. तो व्हेन यू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, द वेरी सेम थिंग हैपन्स. सबसे पहले तो आपका इंटरसेप्ट बढ़ेगा. फाई आर ये आपके पास नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो फ्लक्स रिड्यूस करने से आपके पास पहली चीज तो इंटरसेप्ट बढ़ा. द सेकेंड थिंग इज दैट द स्लोप ऑल्सो इंक्रीज्ड. ये लाइन थोड़ी सी पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, ज़्यादा पैरेलल है, और ये ज़्यादा स्टीप है टुवर्ड्स एक्स एक्सेस. ठीक है, तो ये स्लोप इसमें बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है और बढ़ता जा रहा है. So as you go on increasing the values of decreasing the values of phi, the intercept goes on changing, as well as the slope of the or the droop of the characteristics increases. ठीक है, the very same thing happens in case of DC machines. DC series machines is that when you have these equations substituted for DC machine series machines, so what happens is that characteristics move upwards with a slightly larger slope. यानी phi r और phi 1 जो है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो phi r is phi 1 is more steeper as compared to phi r practical conditions के लिए. ठीक है, ऐसे ही phi 2. तो you have the two characteristics, two basic methods of a speed control as armature voltage control and field flux control, and these two are taken care of by the very basic equations of this. ठीक है, थर्ड वाला जो आपके पास एक और जो मेथड है, दैट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल. ये कहाँ से आता है? ये आपके पास एक टर्म है आर ए का भी, इसमें इस स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप में एक आर ए का भी टर्म है. तो इस टर्म को जो है यू कैन ऑल्सो वैरी दिस आर ए. इफ यू वैरी दिस आर ए, हाउ दिस कैन बी वैरीड मैथमेटिकली, तो आप इसे कम ज़्यादा कुछ भी करते रहिए, बट RA can never be decreased, because once a machine is manufactured or fabricated, in that case whatever resistance of armature is there inside the winding, that cannot be cut out anyway. वो winding रहने वाली है और उसमें उतना ही resistance रहेगा. So you can always increase the resistance by putting an extra resistance in series with this armature circuit. So the net resistance will come out to be RA plus R external से. ये जो आपके पास RA है, ये net effect इसका RA plus R external हो जाएगा. तो what you see over here is that how the characteristics will change. Characteristics में दो components हैं शंट मोटर की. ठीक है, पहला कंपोनेंट है स्लोप का और दूसरा कंपोनेंट है इंटरसेप्ट का. RA बढ़ाने से जो है इंटरसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट थिंग. The second thing is that the slope is going to increase. नेगेटिव स्लोप इंक्रीज करेगा, यानी ड्रूप बढ़ जाएगा. तो अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाएंगे तो इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. इससे अलग होगी, बिकॉज जो आपके पास ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका एक सर्टेन स्लोप है, इसका एक सर्टेन इंटरसेप्ट है. Intercept is not going to change when you change the value of RA. Only the slope will be going to change. तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो सारी स्टार्ट होंगी with an increased resistance will be starting from the same point over here. यानी यहीं से ही स्टार्ट होंगी, and the slope will be increasing. ये ड्रूप बढ़ा, फिर नेक्स्ट और बढ़ाएंगे तो ये और ड्रूप बढ़ जाएगा, ऐसे करके. So you will be having the same starting point as compared to the natural characteristics, when compared to the natural characteristics, and the slope is going to increase.
एग्जैक्टली द वेरी अपोजिट कंडीशंस ऑफ आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में इंटरसेप्ट चेंज होता था, स्लोप नहीं चेंज होता था। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में इंटरसेप्ट नहीं चेंज होगा, स्लोप चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, मे बी हो सकता है हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो नीचे। हाँ, वी हैव दिस। ठीक है, तो वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दिस, एंड एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, the droop in the characteristics goes on increasing with the same value of the intercept throughout. यानी इसमें आपके पास नो लोड स्पीड भी जो होती है वो चेंज नहीं होती। The same thing happens for the case for DC series motor when the value of RA is increased. In that case, what happens is that the curves become more sharper, and as the value of the resistance in series with the series winding increases, so the slopes of the curves get more steeper, and at last what you find out is that for the same machine, अभी हमारे पास एक मशीन थी, है शंट मशीन थी जिसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी अभी तक हमारे पास। उसके बाद हमने उसकी इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये और ये सब नई कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बना ली। दैट मीन्स व्हाट वी एक्चुअली हैड, we had a lot of altered characteristics of the same machine using different methods, and now these methods can be suitably adapted for running different types of loads according to the requirements. ठीक है, इसमें आप different types of load characteristics match करा के you can have desired speed of operations or desired speed torque points of operation. ठीक है, ये चाहे आपके पास ऐसे ही उसका हो, शंट मशीन के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों तीनों। थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ठीक है, ये तीन आपके पास शंट मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, तो यू कैन हैव आइदर दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर, ये आपकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब में मौजूद है, ये वाली है, ये वाली है, और ये सब ऑल्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ये हैं, ये नीचे वाली ये हैं, इसमें ऊपर वाली हैं ये, और इसमें ये सारी नीचे वाली हैं। तो दीज आर द ऑल ऑल्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स what you can achieve using these three methods: armature voltage control, field flux control, and armature resistance control. ठीक है, तो द सेम थिंग कैन बी डन फॉर दिस। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे आ गई, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर चले गई सीरीज मोटर में, और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में जो है वो ये शार्पर कैरेक्टरिस्टिक्स आई इससे। इसमें स्लोप या वो चेंज नहीं हुआ था शेप, बट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स शार्प होती चली जाती हैं। So you have a lot of options to produce these characteristics such that they match to the requirements of the load, whatever you require. ठीक है, now from the coming terms we'll see that how uh, these methods are actually applied. ठीक है, आपने ये तो देख लिया मैथमेटिकली जो है आपके पास ये थी, ये इक्वेशंस आपने डिराइव कर ली थी मैथमेटिकली, उसका फिर कर्व भी प्लॉट कर लिया था कि ठीक है ये ऐसे करके आता है। फिर उसके बाद हमने उसे ऑल्टर भी करके देख लिया कि हाँ ठीक है, अगर ये पैरामीटर्स चेंज करते हैं तो वी कैन ऑल्टर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। So then at last what we reached is that we have a number of altered characteristics using different methods of a speed control, and now we'll see that how these parameters are actually varied. That means कि कैसे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है, कैसे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल किया जाता है, और कैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो इंसर्ट करी जाती है। ठीक है, so it's all for today. Anybody who wants to ask anything regarding the topic that is covered today? इसमें किसी को कुछ पूछना है?
हाँ सर। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हाँ बताओ बताओ। सर और फर्स्ट मिड सेम सिलेबस। फर्स्ट मिड सम सिलेबस जो है, जो डीसी मोटर स्टार्ट किया उससे पहले पहले का है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, चलो।